guys, welcome back to my channel. So as you must have seen in the thumbnail, I had a really bad acne problem going on my face. So basically I was suffering from some acne and some textured skin because of some hormonal changes and because of the medication I'm taking. The heat creates in my body, that's why I'm breaking out so much. So initially I literally tried everything and some like a lot of products didn't work out, but then somehow I found a few medicines which helped me, and then I was not sure about the skincare I should, like what kind of skincare I should go for. So somehow I came across these three products like which I'm gonna mention in this product. These are not the only products which helped me in my acne clearing journey, but these are the amazing products for acne prone skins. And even if you don't have acne, you can use this and keep your skin smooth and shiny and glowy and basically young looking skin. When I see these tubs, I literally feel like some ice creamy tutti frutti vibe going on because they're so colorful. I literally love them. The packaging is like very basic packaging, but it's very sturdy, and for the price it is really good. So I'm gonna come on the products one by one. I'll tell you all which one does what, कौन सा product क्या करता है and कौन सा product कैसे use करना चाहिए. आप वो पूरा वीडियो मेरा देखिए. इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट क्या आपके स्किन के लिए करेगा. So do not skip this video, please watch it. And I'm literally sitting in my bare skin, like without any makeup, nothing going on, simple dress I've worn. I literally washed my face, that's why my dress is damp, because you need to wash your face before using the scrub. So yeah, intro के लिए बहुत कुछ हो गया. अभी वीडियो के अंदर घुस जाते हैं. Stay tuned. So the very first product I'm going to show you is I was about to drop this tub. The very first product I'm going to show. First of all, let's just talk about the brand. This is Nature Leaf, and as the name, it is literally natural, Nature Leaf. It is vitamin C brightening scrub, and इसमें vitamin C है. ये है 699 रुपीस का 200 ग्राम का टब है, which will last you a long, very long time. तो 699 इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए ठीक ही है, but go to my description, go on to the link and buy it from there, so you will get discount. Definitely, I'm going to put all the links इस ब्रांड के और the products के links डालने वाले डिस्क्रिप्शन में. जरूर जाके चेक करो. अगर आपको खरीदना है तो आपको डिस्काउंट फॉर श्योर मिलेगा. ये एक विटामिन सी स्क्रब है. इसमें hyaluronic acid है, and it is for acne and pimples and acne prone skin. This gives you shining radiant skin. And इसके बारे में टेक्सचर वेक्सचर सब बात करते हैं. Let me just dampen my face so I can literally show you while scrubbing how it feels and what it does. So I've dampened my face and my cat is meowing from behind. So if you hear him meowing in background, so please excuse me. I can't really help about it because मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और मेरे cats में कहीं फेंक नहीं सकते just to record my video. So yeah, I have taken a little bit of it, and I'm going to just do like this just to understand the texture of it, and I'm going to explain the texture. जो मार्केट में स्क्रब्स होते हैं वो बहुत ही ड्राइंग होते हैं. Like this is very creamy. I'll show you on the back of my hand so you can get a closer look of it. So when you scrub, this is very creamy in texture. So you don't really, whenever we scrub or exfoliate our skin, इसलिए बोला जाता है कि रोज मत किया करो क्योंकि स्किन को ये ड्राई कर देता है. अपने स्किन का एक्सेसिव ऑयल, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो तो निकालता है, जो एक्चुअल में ऑयल अपने स्किन की जरूरत होती है वो भी निकाल देते हैं बहुत सारे स्क्रब. बट ये वैसा नहीं है. दिस इज रियली नाइस. इट इज लाइक क्रीमी, जैसे अपना मॉइस्चराइजर होता है वैसे में आपको थोड़े वॉलनट के ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं जिससे आप एक्सफोलिएट कर सकते हो. आई डू नॉट रेकमेंड वॉलनट
for our skin because they are really harsh on our skin, mostly face. पर this is really nice. It has like ये बहुत hydrating सा है, like creamy सा scrub है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आप डेली कर सकते हो इससे स्क्रब. और even if you have, please अगर active acne है तो I will not recommend you to do it on active acne. Make sure वो पार्ट आप छोड़ के आप स्क्रब कर रहे हो. Do not forget your neck. Like you must have seen, like I have shown you the pictures of my acne, and now you can see my skin. I literally do not have those big acne. छोटे मोटे bumps अभी भी है क्योंकि I am taking medication और it is not really easy. I have acne prone skin. I have PCOS. तो मुझे acne आने तो है ही, बट आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एंड आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में बता रही हूँ. तो टैन रिमूविंग भी अच्छे से हो जाती है इससे. यू हैव टू जस्ट गो टू सर्कुलर मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन सो योर स्किन स्टेज टाइट. डू इट फॉर लाइक 2 to 5 minutes and then wash it off. So I have washed my face after scrubbing it. So there is one. Oh my god, I'm completely wet. That sounded something weird. Okay, jokes apart. So I'm going to show you the second product of the same brand in this video. So this is Orange Skin Lightening Gel. After exfoliating, you have to moisturize your face. So what I like to do is just apply to any toner. Like I take vitamin C only, and then apply this gel at night time. And it has vitamin C and this is for all skin type. Again, this is 200 gram tub, and this packaging is same plastic packaging with some metal lid, and it also retails for 599 rupees. Again, जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक से आप अगर ये परचेस करोगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा. ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जेली टाइप, बट वैसे जेल है तो जेली ही दिखेगा. और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, ऐसे एकदम स्किन में एकदम से अब्सॉर्ब हो जाता है. एंड दिस इज स्किन लाइटनिंग जेल. लाइक टैन हो रखा है फेस पे, इफ यू हैव गॉटन सनबर्न, then I'm going to take a little bit amount of it, and as you all can see I have tan skin. मेरा बहुत ही अजीब सा टैन हो रखा है फेस पे, इधर है बिकॉज कुछ सन शूट्स किए थे मैंने लास्ट मंथ में. बहुत ही टेरिबल सन शूट्स थे वो, तो टैन हुआ है. तो अभी थोड़ा उतरा है यूज करने के बाद, बट it's really good for skin lightening. I wouldn't say skin lightening, your natural color. It will give you whatever your natural color is. If you are whitish, you'll stay whitish. You are not gonna go white. I am not promoting any whitening products or skin lightening products. I do not really appreciate, and I'm not fond of those products. You should be happy in whatever color you have got. I am very happy in whatever color I've gotten. So जो tan होता है face पे, एक्स्ट्रा डार्क क्यों करना है ना फेस को, क्योंकि डल दिखता है फेस. टैनिंग, गेटिंग योरसेल्फ ब्राउन इज गुड, बट व्हेन यू गेट टैन, नेचुरल टैन, स्किन लुक्स डल. सो दैट आई डोंट लाइक, एंड आई डू नॉट लाइक दिस पैचेस. सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर टैन और स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट, so that tan just I can get rid of that tan. And on the skin it feels really nice. It has citrusy fragrance. Even the scrub has citrusy fragrance. बहुत ही ऐसा ऑरेंज ऐसा लगता है ऑरेंज को अभी पील किया हुआ है. ऑरेंज पील किए कैसे खुशबू आती है वैसे इसमें है, एंड इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट भी है. इट इज रियली गुड फॉर टैन एंड स्किन ब्राइटनिंग. प्रोडक्ट से अब्सॉर्ब भी हो जाता है. इट इज नॉट एट ऑल ग्रीसी ऑन योर फेस. So the next product I'm going to talk about, same brand, Nature Leaf, and it is whitening and brightening cucumber skin repair gel. So what I like to do is this gel sometimes I apply it at night, or maybe sometimes whenever I go in the morning. So when I have shower I apply this gel after that. But sometimes like when I do proper exfoliating and stuff, I do not exfoliate daily. मतलब स्क्रब रोज नहीं करती हूँ, हफ्ते में 4 बार 5 बार करती हूँ, एक आध दिन का गैप छोड़ के. तो उसके बाद आई लाइक टू लेयर अप द जेल्स.
So this gel also looks like gel. So इसका भी टेक्सचर वैसा ही जेली जैसा है. मैं कैसे स्टूपिड से बातें कर रही हूँ, जेल है तो जेली जैसा ही होगा. अगेन सो ये भी थोड़ा थिक सा है, मतलब उसके कंपैरिजन में मैंने पूरे हाथ में ले लिया बिकॉज इट वाज टू मच. आपको थोड़े से की जरूरत है इस जेल के लिए. दिस इज अ रिपेयर जेल. ये जो आपके लाइक व्हाटएवर, इफ यू हैव रिंकल्स, इफ यू हैव पिगमेंटेशन, इफ यू हैव फाइन लाइंस and acne mask, this is gonna remove those things from your skin and face. So this is also all skin type, 200 gram product. The price is 599 rupees. Again, go to the description so you can get discount. So I like to layer it up because it's okay. I wait for like 5 to 10 minutes after applying the vitamin C gel, and then I apply this skin repairing. This gel has some cooling effect, but वैसे इसमें cucumber है तो cooling, soothing effects होगा ही. So if you have sunburn, then after washing your face or coming from like very hot day, if you have come back from any outdoor where you have face sunburn, so you should apply this on the sunburn. You should like you would feel कितना fumble हुई मैं. You would feel really calm, और जो burning sensation है वो रुक जाएगा. So I like to apply this, and after applying this I literally give a good massage. तो क्या ना, ये skin में पूरा फटाक से absorb हो जाता है. And all these both the gels, they absorb in your skin very quickly and keep your skin literally hydrated. Whenever I apply both the gels together, like oi, sorry, that was my cat. Sorry. So when I apply both the gels, when I wake up in the morning, like next morning, उसकी next सुबह होती है मेरी, वो इतनी मस्त होती है ना. When I literally wake up and wash my face, I feel like oh my god, I have got such a good glow without any facial or anything. Like ये वीडियो मस्त है ना, एकदम चिट-चैट हो गया. Like literally, I like talking to you all like this. इतने गैप्स के बाद जो आती हूँ मैं, सो कैचअप करना होता है बहुत सारा, है ना. बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच आई एम नॉट फीलिंग लाइक शेयरिंग राइट नाउ बिकॉज आई हैव हेल्थ इशू एंड माई मेंटल स्टेट इज नॉट रियली गुड. तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ खुद पे, एंड माई वर्क स्केड्यूल इज ऑल्सो really bad. So that's why I get really tired after a little bit of work. I do not have that much of energy like earlier, but I'll get back on track very soon. I don't want to get emotional. तो वो हो ही जाएगा, और then I'll get back on track and I'll be regular. Just if you all can just pray for my better and sooner recovery. तो मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, ठीक है? So yeah, that was it for this video. I really liked all these products, and I definitely recommend you all these 3 products. These 2 gels and this is one, the scrub. Description में जाओ, link है, वहाँ से purchase करोगे तो discount मिलेगा. And I'll put the link of the brand as well, so you can see what else they have, what are other products they have. And the brand's product is really nice. It's completely herbal, natural. They don't have SLS, paraben, सल्फेट, ये सब नहीं है इसमें. nasty chemicals नहीं है. It is not tested on animals. तो सब कुछ gives you green flag, सब कुछ ये है. So I think you all should try this product. और मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही मजा आया आपके साथ चिट चैट करके और मेरा लाइफ स्टोरी बता के how I like the products. और yeah. So that's my signal. I should shut my chat box and say bye to you all. I'll see you next time in my next video. And you guys do not forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't done that already. If you have subscribed, then please like my video. I literally need all the prayers and good wishes from everybody to my healthier and faster recovery. Yeah, I'll see you next time in my next video. You guys just stay happy and keep others happy too. Bye!